Hello everyone, good afternoon. Usha, Nityashri, Virendra, Nishtha, Manjishta, very good afternoon. Are you able to hear me? Good afternoon, sir. Good afternoon. So guys, my plan is, okay, let's start. My plan is for this weekend, today and tomorrow is, today we are going to do some more differentiation, more derivatives, little more deep. Today we are going to learn, say, substitution, another way of differentiating by substitution. And if all good, then tomorrow we may start higher order derivatives, because next week I want to start integration calculus. So this week I want to cover this and then the higher order derivatives. Okay, shall we start? All good, everyone? Yes, sir. So quickly complete attendance if anyone is not done. So we talked about as of now differentiation of various functions, and we also talked about basic standard functions plus function of functions, product rule, quotient rule, addition, subtraction. Very easy. But what if quotient is like this? Suppose if I say differentiate very interesting. Suppose if I say differentiate cos of x to the power x. Now what you want to do? Because we know x to the power n, we know function of function, we know a to the power x, but this is x with respect to x. Okay, differentiate this with respect to x. That is always there. So what are you going to do? Because differentiate cos of x of to the power x. The problem is this now. So we're going to differentiate. That is why we have to use some different method called substitution method. So how we'll solve it? I'll solve one question, next you will solve. So we'll assume whatever given function is, say y. So y equal to cos of x power x. Means power x to power x. Okay, that is what the question is. Now it's a very interesting way. How can we get rid of the x to power x? If you write y equal to cos of x is there, but instead of this x, how it can be removed? When you put the exponential. So you put e to the power cos x. So what happened is, what we are trying to do is, x to power x is there, right guys? So this cos will remain as it is. So let me write first the cos. Now x to power x, if you write in the exponential form, it can be e to the power. This is the concept. You can write always x to power x in terms of exponential and log, right? Because exponential and logs are inverse of each other, right? So x to power x. So what I've done here is x to power x. I wrote as e x log. That is what the property you must use. Okay, everyone. We can always use this property to make function looks easy. So now a question becomes y equal to cos of e to the power x log x. Now definitely you can use function of function, right? So let me start. So this will be the core. Note down this. So let's solve this question. So you have to do dy by dx. What will happen? Dy by dx means d by dx of whatever function given, cos of this, whatever, cos of, in the bracket, what is there? E x log x. E, okay, I need a space there. E of x log x. Right, that is what the question become now. Only thing which I did differently is this. Now this we know how to differentiate, right? First cos of x, this whole is my x, right?
So cos of x is, the differentiation is minus sin x. So minus sin x means the whole thing. Okay, some more people join now. Jaisura is trying to join again. Mahesh. Okay, I admitted. So sorry. So so cos of x is minus sin x. So minus sin or x is same thing. E to power x log x. So cos of x is done. Now, what is the differentiation of only this function? E to power x will remain e to power x, right? How do you differentiate e to power x log x? It remains same, right? E to power x, e to power x. So, into e to power x log x. Then, into, now we will differentiate only x log x, correct? Function of function. We will differentiate x log x. You will use the product rule. So, into, let me write it here, into bracket. What differentiation of x log x? First function into second u into v dash plus v dash into u dash into v. So let's do. Differentiation of x log x is x into differential log x is 1 by x plus log x and differentiation of x is 1. Got everybody? So finally, my question becomes minus sine of ex log x anyway. I can again convert that into x to power x, right? This I can write again because finally I am solving. I can write this as a x to power x again. So minus sine of x to power x into e to power x log x into 1 plus log x. That is the final solution. Tell me any confusion. The main point is the whole thing, the most important part is this. Otherwise, it's just a function of function and product. Tell me, any question? Sir, in this Yes, please. last step, can we write e power x log x as x power x itself? I wrote it here. Oh, no, sir. You want to write this one? Yes, sir. You can write always. Yes, you can write. You can convert this also x power x. You are right. So Okay. question become so final solution become x to power x. Sorry, minus x to power x sine of x to power x, right? 1 plus log x. Correct? That's what you ask. You can always 1 plus log x. Any other question? So this also you convert this. Yeah, I forgot it, but you can do that. Okay, everyone. Now, if I give you another difficult question, let's see, can you do it or not? Let me find. If I say, let me give you another question. Let's see how you do it. Is it clear to everybody how we solve this? Main point one, x to power x equal to e to power x log x. You can convert. Okay. All good, everyone? Or do you want me to repeat any step? Let's try. Next question. What if I say find differentiation of, let me write with hand as well, differentiation of x
to the power x to the power x. Looks easy, but it is not as easy as looks like. Tell me, how will you do it? Any ideas? I give 15 seconds. Let's see. So the power x to the power x can be converted as Yes. ex log x. Then the formula can be used. Function of function. Then we can use function of function. So what you will do is, first let's say this is y, and you need to find dy by dx. I am converting this x to the power x as e to the power x log x, right? So my question becomes y equal to e to the power x into log x. Correct, everybody? That is what my question becomes. I taken one power out. Now what are you going to do? You differentiate this, that's it. So what will be dy by dx first step? This whole thing in the power. This whole thing is in the power. One power now. Correct? So what will happen now? I can say this is nothing but e to the power x remains e to the power x only. So e to the power x log x. This will remain as it is. Into, then you do d dx of, now you will do d dx of what? The circle thing, this thing. X to power x log x. Sir, That is how you want to do. Yes, please. sir, is that not x power e power x log x? No. E to the power x. Sorry, the question is x to the power x to power x. Yes, sir. So if you have to remove one this, whole this remaining part should come as the e to the power. Okay, sir. If you remove this, in whole this part should come as the e to the power. That's the logic. That's it. Okay. So now e to the power x log x into d dx of x to the power x log x. Now what are you going to do it? Again, this is x to the power x, right? Again we'll do same stuff. So first I'll copy this e x. I'm not doing anything, I'm just copying as it is. Log x. Now d by dx. See, this is very complex in thinking only. Now again, if I want to do d to the power d of x to the power x, what I can write x to the power x is? What I can write this one? E to the power x log x or not? I wrote only this as e to the power x log x, and into log x already I have. So what I did, I just this part again I converted e to the power x log x. This is why question becomes now. I know it may feel difficult initially, but when you understand that we can always write x to the power x is e to the power x log x, then no problem. Sir, how to understand that which, like I have also done in the same way, like x raised to e to the power x log x. First I have done like that only. So how to understand that which x to the x we have to convert it? How to convert? Means here it is like x to the power x to the power x. So what I did was x to the power, that power I converted into like x to the power e to the First power of x all, log we x. know this.
Okay, the standard is this. We know x to power x is what? e to the power x log x. E to the power x log x, correct? Yes, yes, sir. Let me write this so that will be very clear. 1 second. That is how x to power x means, correct? Yeah, yes, sir. Now, when you say x to power x means what? As of now, you assume this as a one entity. Yes, sir. Then what happens? So it will become x to the power e to the power x log x. Correct? Yes, sir. This way. You have to assume, and because you always go from top to bottom, right? You assume this is one entity. Yes, sir. That is the best way. You join together and make it one entity, then become more easy to assume. It's all about assuming it. I mean, it's all about visualizing it, right? ठीक है उषा? सर फिर भी नहीं समझे. I mean वो तो then again it is coming like x to the power e to the power x log x. Then here you have converted like पहला वाला x ना, y equals to e to the power x to the power x log x. अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस सपोज इसको एक बॉक्स बना लो. हाँ, yes sir. क्या बोलते हैं, कहाँ गया हमारा? इसको सोचो कि बॉक्स के अंदर बंद है ये. Yes sir. तो वो वाला पार्ट जो है वो e to the power x log x बन जाएगा. ये पूरा नहीं, ऊपर वाला नहीं बन जाएगा. ऊपर वाला सिर्फ बंद है वो, ये बोल रहा हूँ. अच्छा अच्छा, ओके ओके. दिस x टू पावर x इज, उसको ऐसा सोचो कि ये एक ऐसा बॉक्स है, ये ऐसा बॉक्स. अच्छा, ओके ओके सर, समझी. उस पूरे को x मान लो या y x मान लो. हम्म. सो अगर ये क्वेश्चन मेरा अब ऐसा है कि x टू पावर x, तो यही होगा ना. हाँ, यस सर, यस. अब वो x के बदले वापस डाल दो. हाँ. Is everybody getting it what I'm doing? Question is how to know which one to do. मतलब what I'm saying is, if suppose x to power x, again I am explaining just to, अगर ये क्वेश्चन है, what do you think is, सोचो कि इसके अंदर कुछ है वो दिख नहीं रहा है हमको, it's closed, you're not able to see कि इसके अंदर क्या है for a moment. suppose वो है t, तो x to power t है ना वो, उसको लॉग के हिसाब से देखो और फिर बाद में t के बदले x to x डाल दो. That is what we are doing everywhere. Shall we move on now? Yes sir. तो ये क्वेश्चन बन गया. अब क्या करना है? अब तो बहुत इजी है. ये तो ऐसा कैसा, ये कुछ नहीं, कांस्टेंट है तो हो गया. मतलब कांस्टेंट मतलब इस मोमेंट में डिफरेंशिएट हो चुका है. वी विल टेक डिफरेंशिएट ऑफ ओनली दिस. फंक्शन ऑफ फंक्शन हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन हो जाएगा. सो ये तो आई विल कॉपी एज इट इज. या फिर उसको मैं वो भी लिख सकता हूं अब तो, x टू पावर x आल्सो, बिकॉज़ काम खत्म हो गया उसका, राइट? x टू पावर x. दिस इज दिस वन. अब वो करना डी डी एक्स ऑफ दिस, e टू पावर x log x into log x. ये हमारा प्रोडक्ट फंक्शन हो गया ना. ये u हो गया, ये v हो गया. सो डी डी एक्स ऑफ u, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं. डी डी एक्स ऑफ u इंटू v क्या होता है? तो पहले हमने सपोज log x को ऐसे लिख दिया, मतलब v को ऐसे लिख दिया, तो डी डी एक्स ऑफ e x log x. So let me write in the ddx form so that no confusion. ddx of ex log x. और उसको बाद में करेंगे, but just to understand this. प्लस इस बार u को ऐसे लिख दिया, e to power x log x. And ddx of log x. यही एवरीबॉडी. सेम स्टेप राइटिंग इन ए वेरी वेरी सिंपल, मतलब स्प्लिटिंग वे. तो यू वी में व्हाट यू हैव डन इज v इंटू यू डैश प्लस यू डैश इंटू v, किसी भी फॉर्म. तो फर्स्ट आई पुट log x, तो मैंने v ऐसे लिख दिया और बोला यू डैश का लॉग करूंगा, u का लॉग कर, u का ddx करूंगा, प्लस u ऐसे लिख दिया, v का डिफरेंशिएट करूंगा, इक्वल टू, ये तो ऐसे आ गया x x x.
एक्चुअली लिखना में टाइम लगता है, अदरवाइज वेरी इजी. log x ऐसे आ गया. नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएट ऑफ e टू पावर x log x? क्या होगा ये डिफरेंशिएट ऑफ, बताओ उषा. डी डी एक्स ऑफ ये क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ ex is ex. e to the power, yes sir, e to the पहले तो power e to power x log x लिख देंगे ऐसे ही. हाँ, yes sir. उसके बाद फिर से x log x का वो उसके बाद करेंगे. x log x का डिफरेंशिएशन करेंगे. तो डिफरेंशिएट ऑफ, ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन कर रहे हैं इसी का भी, राइट? यस सर. तो ex का तो ex हो गया इनटू डिफरेंशिएट ऑफ x log x, तो इनटू. अब डिफरेंशिएट ऑफ x log x क्या होगा? फिर से u और v into 1 by x. तो u माना, इसको v माना, राइट? x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x. log x 1 by x प्लस log x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x. it should be 1 हो गया, राइट? ये तो हमारा अभी ये पार्ट हुआ है. प्लस अब ये वाला पार्ट करना है. e x log x तो ऐसा कैसे ही है, e x log x तो बाद में चेंज कर सकते हैं हम, लेकिन e x log x इनटू डी डी एक्स ऑफ log x तो 1 by x. बस फाइनली सिंपलीफाई करके और उसको वापस कन्वर्ट करके लिख दो तो हो गया. ठीक, कंसेप्ट वाइज तो वही है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है और प्रोडक्ट है. हाँ, अप्लाई कैसे करना है, वेरी केयरफुल. इसलिए थोड़ा सा ये इट बिकम ए कॉम्प्लेक्स इन राइटिंग की, बड़ा इक्वेशन बनता है. करेक्ट? नो, नेक्स्ट स्टेप यू कैन आराम से डू, जस्ट सिंपलीफाई एंड डू इट. इज इट डिफिकल्ट गाइस और इट्स इजी? इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप राइट हो गया, वी आर डन. गुड. To move on, let's try another one. I'll wait for 10 seconds. You can go through it. And then we can move on. Okay. Let me move on. What else we can do? So all these questions you can always substitute and do it. Now I am coming to this kind of question. See, this requires a lot of log. I don't know. See, one more thing. Tell me in your CBSE board or any board, when they explain log, because I never saw in my childhood log. I learned my own. No, I don't know now education system when they teach logs. Any idea, anybody in school, which class they learn? Sir, we were taught in class 9th. Class 9th. Is it? Okay, I didn't so. But they don't teach in very deep, right? In detail, right? But logarithm is very important in your engineering and your 11th, 12th. So like very important. Let's say how we solve this kind of question. Very interesting, very different. If I say y equal to x to the power x to the power x, अब जगह भी खत्म हो गई, तो पावर x, और ये चलता रहेगा पावर ऊपर infinity. Let me make an infinity symbol. If y equal to this, we have to find dy by dx. मतलब क्या है, x to power 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 x like that है, infinity तक. अगर infinity से कम हुआ तो नहीं कर सकते, infinity होगा तो कर सकते. Tell me what will do? How will you solve? ये मैंने हिंट दिया ऑलरेडी. अगर वो इन्फिनिटी तक है, apply logarithm on both sides. वो तो बात की बात है जयसूर्या. I remember I can, but what is the main thing? Yes, logarithm तो बाद में करेंगे, पर अभी तो वो इन्फिनिटी वाला हटा रहे. What you can do जो भी is, पावर होगा उसको एक see y मतलब, हाँ निष्ठा बोल रही है, बोलो निष्ठा. सो जो भी पावर है उसको सब्स्टिट्यूट कर ले, अज्यूम कर ले कोई वैल्यू. पॉइंट ये है गाइस, वेरी गुड निष्ठा. सी व्हाट इज y? y is x to power x to power x to power infinity. अगर मैं ये सोचूं तो ये क्या है? Tell me guys, this is also y or not? Yes sir, x That to is the power that is the y. point, because x to power x to power x to power till infinity. Infinity से एक कम भी कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? So x to power x to power x to power x to power infinity is y. मतलब ये जो पूरा मैंने जो स्क्वायर बनाया ना, बॉक्स, ये पूरा y है, राइट? It means
my quotient I can rewrite as y equal to x power y. अब कितना सिंपल लग रहा है जयश्री? दैट इज व्हाट आई वांट, दैट इज द गोल्डन स्टेप. उसके बाद तो बहुत इजी है. y equal to x to power y. अगर वो इन्फिनिटी तक नहीं होता तो थोड़ा मुश्किल होता. इन्फिनिटी का मतलब कि वो सेम ही फंक्शन है ना, x to power x to power. सो y equal to x to power y. अब क्या करेंगे हम लोग? विल टेक log टू द बोथ साइड. तो log लिया दोनों साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया? log y. और राइट साइड में क्या हो जाएगा? टेल मी, इफ आई टेक द लॉगरिथम ऑफ राइट साइड क्या हो जाएगा? log a to the power m log a. Yes, because if I put log and log here, so log y, log of x to power y means y जो पावर है वो आ जाएगा तुम्हारा कोफिशिएंट में, y log y. तो क्वेश्चन बन गया log of y equal to y of log x. अब तो बहुत इजी है. नो विल डिफरेंशिएट बोथ साइड. ये dy by dx तो क्वेश्चन में था, राइट? नो विल डिफरेंशिएट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. बताओ, राइट साइड लेफ्ट साइड डिफरेंशिएट करते पहले कौन बताएगा? उषा बताएगी, मनीषा बताएगी, जयसूर्या कौन बताएगा? log y का डिफरेंशिएट करके क्या आएगा? विद रेस्पेक्ट टू x, सो 1 by y. और उसके बाद into dx by dy. dy by dx. हाँ, जयसूर्या उल्टा हो, dy by dx. That is the left hand side. log y is 1 by y and y का डिफरेंशिएट dy by dx. Tell me, who will tell me? निष्ठा, y log x डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसका? It is y log x is y into log x. Product rules है sir. Very good. So Y into differentiation of log x, so y by x. y into differential log x, so y into 1 by x plus log x dy by dx. plus log x dy by dx. Very nice. See, इसलिए कंसेप्ट है मोर इंपोर्टेंट, अदरवाइज तो बहुत इजी है. log x तो हो गया और y का डिफरेंशियल किया तो dy by dx हो गया. Very good. So first we shifted the problem to our basic problem, then we taken the log. Now we differentiate both side. उषा, आप क्या करने वाले हैं हम लोग? We'll put all the dy by dx term in the one side, right? Yes, sir. So अगर मैंने इस टर्म को इधर ले गया लेफ्ट साइड में, माइनस हो गया, तो मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ dy by dx कॉमन लिया हमने. ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 by y minus log x. 1 by y minus log x. गुड. ये तो हो गया लेफ्ट साइड. राइट साइड में क्या बचा? y by x इक्वल टू y over x. फाइनल को निकालना क्या था? dy over dx. So dy by dx equal to, interesting method, right? How can we just make it such a bad question into easy one? ये मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है? Sorry. dy by dx equal to y over x by 1 by y minus log x. करेक्ट? और इसको और सिंप्लीफाई करना है तो y से मल्टीप्लाई कर दो. ये तुम्हारा ये भी चला जाएगा, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन का नीचे वाला, बट आवर चॉइस. So dy by dx equal to y by x equal to 1 by. Only problem in this kind of thing is your answer will come in the form of y. That is fine because the equation dependent वाला है. That's it. So dy by dx equal to y by x. Or if you want to multiply with y, it become y square. तो ऊपर है. Sorry. मैं x को नीचे ले आता हूँ. ब्रैकेट लगाया. y से मल्टीप्लाई है तो हो गया 1. ये हो गया y log x. Tell me if any this step is okay, everybody? Sorry, ये cursor is y log x. That should be the final simplest possible answer. Any confusion? Good. You want to try one question now?
Wait for 10 seconds. No doubt. Then yes, Nishta is very good. Nishta always responds. Easy, very good. Anybody, any question on this? So let's try this time. Your turn. GTG Usha. Good. Your question is very simple. If y equal to say root of, sorry इतना बड़ा लिखना पड़ा, sin x plus again one more root sin x, you understood now what will happen, plus root of sin x plus root of sin x plus like this it will go till infinity. Find dy by dx. Everybody solve and tell me, it will be easy. Everybody solve and tell me the answer, please. Y equal to root of sin x plus root of sin x, मतलब उस रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट, इट्स लाइक दैट. Tell me who want to solve with me. Any? Sir, can I? Yes, please. क्या करेंगे उषा? Sir, first it will be हम लोग convert करेंगे तो y Okay. equals to under root of sin x plus y होगा. Correct, because हम लोग क्या कर रहे हैं? Let me make a box. हम लोग इस पूरे को, ये y है पूरा, right? Y, yes. यही point है. So let me write in the form of ज़्यादा easy. Correct? Yes. Y equal to root of sin x plus y. अब क्या करने वाले हैं उषा? सर रूट को हम लिख सकते हैं sin x plus y पावर हाफ. ब्रैकेट का हाफ. यस. और कुछ कर सकते हैं, वो तो ठीक है, लिख दिया हाफ. फिर क्या उसको होगा? फिर log में फिर कन्वर्ट कर सकते हैं. कर सकते हैं लॉग में, पर फायदा क्या है लॉग में? इससे अच्छा स्क्वायर करें तो? स्क्वायर, हाँ सर, स्क्वायर करें तो और इजी हो जाएगा. स्क्वायर करेंगे तो और इजी हो जाएगा. तो हम लोगों ने कराया स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो उषा हो गया ये y स्क्वायर. हाँ, इक्वल्स टू sin x plus y. ये तो ज्यादा इजी है ना, यस सर. क्योंकि नो वी नो हाउ टू टेक अ डिफरेंशियल ऑफ बोथ साइड. तो स्क्वायर क्या बोथ साइड का गाइस, सो वी गॉट दिस. नो वी डिफरेंशिएट बोथ द साइड. तो उषा डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट साइड का. y स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा? 2y dy into dy by dx. वेरी गुड. राइट साइड sin x का डिफरेंशिएट तो क्लियर है, cos x. हाँ, cos x और y का प्लस dy by dx. सो वेरी नाइस. अब क्या करने वाले हैं उषा? सर dy by dx को लेफ्ट में ले लेते हैं. यस सर, dy by dx को लेफ्ट में. So 2y dy by dx minus dy by dx equal to cos x. यस सर. अब dy by dx कॉमन ले लें. कॉमन ले लेंगे. यस सर. तो क्या बच गया? 2y minus 1 equals to cos x. ये तो एकदम सिंपल सा हो गया, ये तो सोचा था उस समय मैंने. तो फाइनली dy by dx क्या आ रहा है? cos x by 2y minus 1. I never thought it would become so easy. महेश थोड़ा अलग है. So cos x by 2y minus 1. That's it. That is what the answer. Super. Mahesh okay? Nishta, Jayasuriya okay? कोई कंफ्यूजन है?
CC. Mahesh, are you getting it? Yes, sir. Good. So that is how we solve this question so easily. Let's do one question next. This is for you guys again. If I say if y equal to x plus one by x plus 1, you will understand now obviously क्या होने वाला है, right? By x plus ये चलता ही आएगा. Okay guys, 1 by मैं डॉट डॉट लगा देता हूँ बस. So tell me what will be dy by, there is no space, okay. What would be dy by dx? Let me write here, find dy by dx. Everybody find out. हाफ होगा महेश? शायद से Let's see. Nishta, you will solve this with me? Yes, sir. So take 10 seconds, 15 seconds, and then we'll start. So I'll make a box so that everybody understand कि हम लोग क्या करने वाले हैं. Which box will be the here point? Y equal to x plus 1 by x plus 1 by x plus 1 by x plus 1 by. ये पूरा बॉक्स है, राइट निष्ठा? Yes, sir. चलो स्टार्ट. क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आएगा हमारा y equal to Y is equal to x plus x plus 1 by y. That's it. Yes. ये पूरा रेड बॉक्स मेरा y है, वही हो रहा है x plus 1 by x plus 1 by. तो y equal to x plus 1 over y. अब इसको सिंपलीफाई करना है. क्या करें? y से मल्टीप्लाई कर दें. आई डोंट वांट फ्रैक्शन, क्योंकि वैसे ही फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में रहेगा तो आने से मुश्किल होगा, राइट? Yes, sir. सौम्या, यू केम लेट. y सो मल्टीप्लाई किया इसको निष्ठा, तो ये हो गया y स्क्वायर Y square इक्वल टू xy plus 1. करेक्ट. Yes, अब sir. इसको डिफरेंशिएट करना बहुत इजी है. Yes. डिफरेंशिएट ऑन द बोथ साइड. तो लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? 2y dy by dx. 2y dy by dx. अब xy में प्रोडक्ट रूल. Product rule. X dy by dx x into dy by dx plus y प्लस y. प्लस y. तो जगह नहीं चाहिए हो, क्योंकि ये तो हमारा xy का हो गया और प्लस 1 का डिफरेंशिएट तो 0 हो गया. 0. अब क्या करने वाला है निष्ठा? So dy by dx कॉमन लेके 2y minus x कर सकते हैं. So dy by dx लिया. So guys, we have one step we are not doing it. First we moved this one x, this one we moved to left side. तो 2y minus x. 2y minus x. और राइट साइड में बच गया y. Finally, my dy by dx would be y by 2y minus x. Correct? Yes, sir. That should be the answer. Thank you, Nishta. Yes, sir. Soumya, what is 1? So too easy, right? When you substitute all this, then becomes so easy. Let me check different type question now.
Now let's do another type of question where you substitute, but you introduce another variable. We call it differential of parametric. Let's try that. Okay. Now, before I solve the question, I'll explain one concept. Suppose this is a function y with respect to x. So we do differential with dy by dx, right? If we can write y and x both in the form of another variable, say t. So y is a function of t, x is a function of t. So it also can become dy by dt. Not dx, sorry. By dx by dt. एक ही बात है. So we can also look at it. If you have to find dy by dx, if you can write y and x in the terms of t, then the same thing. You do dy by dt over dx by dt, it gets dy by dt. So let me give one example. Suppose if I say, no, I have to write with hand. Suppose I give you one question and the question says find if x equal to, say, is already given in the form of no t, I just take an example. You can take anything. Suppose it says a secant of secant cube theta. Instead of theta, I am writing t, guys. If x equal to a sec cube theta and y equal to a tan cube theta, find dy over dx at theta equal to 60 degree. How will you solve this? Suppose that is the question. So we will have dx by dt first, and then we'll have dy by dt, then we will divide it to get dy by dx. You are right, Nishta. So let's start. So Nishta, you will tell me what will be if x equal to a sec cube t, what would be dx by dt? Let me write in the blue. So that solution is in blue. So tell me, Nishta, what will be dx by dt? Now dx by dt means your differential function x with respect to t, means the function is the variable of varies with t, and we know that x equal to a sec cube t, right? कितना होगा? So a तो constant है, तो a आ गया. sec cube t, तो sec cube t मतलब पहले तो हम लेंगे sec t मतलब कि x है वो, मतलब x, तो फंक्शन तो x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर. Yes sir. 3 square into 3 into sec square t. एक मिनट मुझे लिखना है, उसको ऊपर जाके लिखना पड़ेगा. तो sec square t, तो ये तो हमारा हो गया अभी only about x cube t. अब है sec t भी है, राइट? Yes sir. और sec t का डेफिनेशन क्या होता है? Cosec minus cosec. sec t का होता है sec t tan t. Sec t tan t, yes yes. करेक्ट. sec x का होता है sec x tan x, राइट? सो ये हो गया sec t tan t, राइट? Yes sir. कैन यू एक्सप्लेन निष्ठा, तो कैसे लिखा हमने, सबको पेपर क्लियर किया हमने, क्यों कैसे आया ये? We have taken a as constant in the whole expression first, so a remains there. Then we use function of function n to power x, so we write we write nx square, so 3 sec square t. But then this is not the same function, so we differentiate sec t again, so we get sec t tan t. परफेक्ट. तो उसको मैं सिंपलीफाई करके लिख लेता हूं. तो dx by dt मेरा आ गया 3a sec cube t, करेक्ट? Yes sir. 3a sec cube t tan t. That is what we got dx by dt. ठीक है. Now y is equal to a tan cube t. You want to do this also, Nishta, please? Yes sir. dy over dt.
A ए तो फिर कांस्टेंट है, 3 tan square t. 3 tan स्क्वायर टी, और tan x का होता है sec स्क्वायर x, करेक्ट कृष्णा? Yes, yes sir. Sec square t. तो ये हो Here. जाएगा इनटू sec स्क्वायर टी। ये हमारा हो गया dy बाई dt। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ज्यादा कुछ करने का है नहीं सिंप्लीफाई में, इसको तो सिर्फ 3 हो जाएगा यहाँ पे, राइट? Yes. 3 है 10, कहाँ गया वो, 10 स्क्वायर टी, अच्छा वो चला गया, ठीक, n sec स्क्वायर टी, ये dy बाई dt हो गया। Yes. नाउ हमको करना है dy बाई dx, and dy by dx is obviously dy by dt divided by dx by dt. right, so this divided by this is by dy by dx, वो हमने शुरू में देखा था। So Yes, I'll sir. directly write dy over dx, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ जो ये दिया है यहाँ पे, 3a cancel हो जाएगा सर। चलो मैं इसको इससे लिख लेता हूँ 3a, हाँ but let it write once so that people can take a screenshot। 10 square t sec square t, तो फाइनली हमको निकाला है 60 डिग्री पे, ये हो गया dy by dt ओवर, वो कितना था, 3a था वो भी, sec क्यूब bt, और तो पहले मैं 10t लिख देता हूँ यहाँ पे, 10t, free hand is more difficult, okay, sec क्यूब t। तो सिंप्लीफाई करना है निष्ठा, क्या होने वाला है सिंप्लीफाई करने के बाद? 3a से कैंसिल हो जाएगा, ये तो गया, sec स्क्वायर ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, sec स्क्वायर t नीचे बचेगा sec t, तो sec t तो यहाँ बचा है, और ऊपर से tan t बचेगा। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, कुछ हो सकता है? आई थिंक सो। 10 मतलब साइन बाय कॉस, tan is sin by cos नीचे and कॉस और sec 1 हो गया, फाइनली sin t आ गया। तो tan t मतलब साइन बाय कॉस, राइट निष्ठा? yes sir. तो साइन बाय कॉस, कॉस इनटू sec इज 1, रेसिप्रोकल होते हैं, तो सिर्फ sin yes t sir. आंसर आ गया। Yes sir. आंसर आया sin t। अब इन्होंने बोला एट थीटा इक्वल टू और t इक्वल टू 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री, sin 60 कितना होता है, 0 1 2 3 3 बाय 2। और गाइस मैंने सबको AM3 में बताया है, सॉरी AM4 में ट्रिग्नोमेट्री में, कि हाउ टू डू दिस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स orally, 0/4 1/4 2/4, right? You can find only angles orally, no need to mug up the table. So final answer for this question is the differentiation of this is at t equal to 60 degree is √3/2. That's it. Thank you, Nishtha. Yes. Tell me anybody, it is simple. Anybody, any confusion, any question? Let me give another question and see whether you can do this. This is good. Okay. Cosective क्यों आएगा? जयसूर्या? हाँ, √3/2 is correct, Somya. Sorry, sir. No problem. Science is correct, right? Yes. Okay, everybody solve this question. This time will be easy. Find dy by dx if x equal to 1 minus t squared over 1 plus t squared. And I am writing this form, but it is 1 plus t square is a whole denominator, okay? And y equal to 2t over 1 plus t square. Can you solve quickly? What will be dy over dx? X is given this, y is given this, both in terms of t. It's an easy question, I know.
Now after that we are going to do another type, but before that let's solve this. Y equal to this, x equal to this, find dy by dx. And one more thing here now is, see, I am not interested in really dx by dt का final value क्या आता है, dy by dt का final value क्या आता है. Why? Because जब मैं dy by dx करूँगा, denominator will cancel, right? Both places. I am not really worried about writing denominator so much. So who want to solve with me? Jay Surya? Yes, sir. चलो हम लोग करते हैं dx by dt पहले. It is in the u by v form. u by v form. तो नीचे तो v स्क्वायर आना है. तो मैं सिर्फ v स्क्वायर लिख रहा हूँ. You know why? Because finally कटने वाला दोनों में, right? कि दोनों का सेम है. So I am not going to really write full. We'll directly do that. So ये मेरा u है, ये मेरा v है. dx by dt क्या होगा? 1 plus t square into 1 plus t square. Into differentiation of 1 minus t square. कितना होता है? minus 2t. तो डायरेक्ट यहाँ लिख दो. Yes, sir. सिंप्लीफाई करके. Then minus 1 minus t square into d differentiation by of 1. dx of 1 plus t square 2t. So 2t हो गया. ये भी 2t लिख दिया यहाँ पे मैंने. और इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूं, सो इजी फॉर मी. 2t मैंने बाहर लिया. 1 plus t square minus 1 plus t square. 1 minus t square. What we taken outside? Minus 2t, right? Yes, sir. Yes, sir. So क्या रह गया? 1 plus t square minus 1 minus 1 plus t square plus t square whole by v square. whole by v square. और ध्यान से देखा जाए तो this also becomes simplified. मैं v square ऐसे लिख रहा हूँ now, but what will become t square and t square? 1 and 1 go 2t square. So minus 8 t cube, right? Yes, sir. तो कितना इजी हो गया है? minus 8 t cube. That is my dx by dt, right? Is it okay? Yes, sir. अब dy by dt. नीचे तो v स्क्वायर है, करेक्ट? जय सूर्या. Yes, sir. Yes, sir. 1 plus t square into t. Not t. 2. Only 2. Yes, sir. So 1 plus t square into 2 तो 2 तो ये हो गया. Minus 2t into 2t. 2t into 2t. तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा इसको? 2 if you take 2 as common. हाँ, या फिर मैं पूरा अगर मैं फुल भी कर देता तो 2 plus 2t नो आई मल्टीप्लाइंग इट. 2 plus 2t square minus 4t square. minus 4t square by v square. Okay. तो हो गया ये 2 minus 2t square, करेक्ट? Yes, sir. और 2 also take common 2 1 minus t square. तो आ रहा है? Yes, sir. 4 by v by square. v square. उसके बाद तो we will take just dy by base dx. Yes, by sir. Whole by this. Whole by minus 8t cube by v square. so finally my dy by dx would be, अगर कुछ गलती नहीं किया है तो यहाँ पे आएगा 2 1 minus t square, करेक्ट? Yes, sir. Whole by minus 8. So minus 8t क्यूब कैसे आया dx by dt का? गलत किया है क्या? पता नहीं,
मेरा सर -40 आ रहा था. लेट मी चेक. ठीक है, वो गलत होगा, विल चेंज गलती. सो -80 क्यूब. ये आंसर आना चाहिए, राइट? अब देखो कैसे आया था, देखते हैं यहाँ पे हम लोग. ये देखो, ये टी स्क्वायर और टी स्क्वायर तो 2t स्क्वायर हो गया, राइट? सी 1 and 1 तो गया, राइट? यस सर. और टी स्क्वायर पे 2t स्क्वायर 40 क्यूब होगा. यू आर राइट. Yes, sir. 40 क्यूब है ना? क्या अलग है? तो टी स्क्वायर इंटू टी कर रहे हैं ना हम लोग. 4 होगा, इतना सी फर्क है बस, राइट? सर क्यूब वाली जो वैल्यू है वो कट जाएगी मुझे लगता है, बिकॉज 2t1 + t² है, यहाँ माइनस है. देखो 2t मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे -2t था ना, यस सर. यहाँ भी -2t था. तो लेट मी चेक, मेरा शायद गलत भी हो सकता है. तो -2t कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 1 + t स्क्वायर. हाँ, यहाँ पे बचेगा +1 - t स्क्वायर, क्योंकि -2t बाहर जा रहा है ना. +1 - t स्क्वायर बचेगा. सॉरी, यस, क्योंकि हम लोगों ने -2t कॉमन लिया है. यस सर. तो t स्क्वायर और t स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 और 1 2 बचेगा. तो 2 × 2 -4t आने वाला है बस. यस सर. क्यूब नहीं आएगा. So guys, the point is -4t, इतना ही बचेगा. वो हम लोगों ने माइनस गड़बड़ कर दिया. So v स्क्वायर. यहाँ पे ये कट गया, क्या हमारा आ रहा है यहाँ पे -4t. और if we simplify, it become 1 - t स्क्वायर, या 1 - t स्क्वायर को उल्टा कर देते, t स्क्वायर -1, करेक्ट? t स्क्वायर -1 और माइनस चला गया और 2t. ये आंसर आना चाहिए फाइनली. t square -1 by 2t. Everybody agree? Yes sir. So that's what. Again, it was very simple question. Just the concept is take tx by dt and divide by dt and then divide to divide by dx. Okay, before close, shall we do one more different type? This is very easy, everyone. So another type is you differentiate something with respect to something else. Yes, t square minus 2. So we are correct. If I give a question like this, again differentiate a function with respect to another function, new topic. If I say, suppose differentiate, say log of sin x with respect to root of cos x. Suppose if I say differentiate log of sin x with respect to root of cos x, that bhi kar sakte hain, but become difficult. So what we'll do is we'll first substitute. So what we'll say, that is more easy to visualize. Let's say u equal to log sin x and v equal to root of cos x. I am just assuming it. So u equal to log sin x and v equal to root of cos x. तो मतलब हमको डिफरेंशिएट क्या करना है, ये मेरा u है, ये मेरा v है. मतलब फाइनली व्हाट वी हैव टू डू, मींस वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंशिएट ऑफ u, मतलब du विद रेस्पेक्ट टू v, मतलब dv. मतलब ये सॉल्व करना है. अब नो इट लुक्स सो इजी, राइट? वी हैव टू फाइंड आउट du ऑफ dv. दैट इज द होल क्वेश्चन नाउ. अगर क्वेश्चन हुआ डिफरेंशिएट दिस विद दिस, मींस वी हैव टू फाइंड आउट du by dv. अब du by dt कैसे निकलेगा? du by dx ओवर dv by dx, जो हमने पिछला टर्म किया उसी को हम लोगों. So du by dv, how will find out? By du by dx over dv by dx. So this is what we have to find out. So how will find out du by dx? Tell me everybody, what is du by dx? log x का होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, log x का 1 by x, so 1 by sin x into, मतलब न्यूमरेटर में sin x का cos x.
तो कितना हो गया cos x by sin x मतलब cot x. So du by dx is cot x. ऐसे dv by dx क्या होगा एवरीबॉडी? अब हमारा फिर से वो फंक्शन है cos x का रूट मतलब रूट x. व्हाट इज रूट x का डिफरेंशिएशन? हाफ इंटू x का 1/2 root x, sir. हाफ माइनस हाफ या 1/2 root x. Just writing for a sake of this. 1 second. So ये तो हुआ रूट ऑफ cos x का. Now into differentiation of cos x which is minus sin x. तो माइनस को यहाँ ले लेता हूँ. So finally dy by dx will be minus sin x over 2 root cos x. तो ये मेरा I got dv by dx is this. I got du by dx is this. So I can easily find out du by dv. Tell me. Difficult or no? Very easy, right? Because I formed my equation in a easy form. So du by dv जो कि हमको फाइनली चाहिए. So cot x over minus sin x by 2 root cos x या 2 ऊपर चला जाएगा. So let me write 2 here. Let me write cos x. Cot by sin. Can you simplify? No. ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है. It will still remain. It will still remain your sin x to cos x कर सकते हो बस. Final answer would be minus 2. Sin को ऊपर लिया तो cos x. Let me write in there. Okay. Cos x, cot x, root cos x. Tell me, is it correct and any confusion? Minus 2 cos x, cot x, and root of cos x. And root of cos x. That is the final answer. Main trick was this, U or V. Easy, too easy. Any question, anyone? So we are differentiating function with respect to another function, and that is important. So that's why you have to, yes, Nityashi. That's why we have to just assume one function is u, one function is v, and that's it. So tomorrow we may do some more question on this before we go to higher order differentiation if you want. And then lastly we'll go for higher order differentiation in tomorrow's class. Acha, if I ask a very simple question before we close, can you solve this? Very simple question. If I say, let everybody do it and give very fast. Differentiate x square with respect to x cube. Tell me the answer very fast. How you do it and quickly. I know many of you may do orally also. 2x by 3x square. Okay, correct. Done it right. It is as simple as. Actually, यहाँ पे substitute कर सकते हो, लेकिन oral दिख रहा है 2x by 3x square. Answer हो गया 2 by 3x, right? Good. Right, everybody? Differentiate of this with respect to this, मतलब वही या तो u और v ले लो. ये oral दिख रहा है तो it's okay. You can directly do also. Sir, what is the answer, sir? Answer will be 2x by 3x square or 2 by 3x. Yes, sir.
2x हो गया तो 2 और 3 स्क्वायर, तो this should be the answer. निष्ठा यही बोला तुमने ना? Yes, sir. Good. So whichever way, but I'll suggest when it becomes more complex, substitute as u or v or something. That's it. Enough for today. Learn something, some ideas how to differentiate function of function and more complex, infinite or series kind of questions. So okay, thank you everyone. Let's meet tomorrow and solve more questions of this and some higher order derivatives. That's what I'm planning. Thank you. Bye bye. See you tomorrow. Thank you, sir.